Panacea H2O. One world, one family, ENAGIC. Our vision is to be world leader in holistic abundance. Our mission is simple and profound. We help you to be a better you by integrating multifarious transformational initiatives. Come, let's unify the world. Come, let's unify the world. Come, let's unify the world. Let's unify this world. Come, let's unify the 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 world. Hello everyone, my name is Sam Tran, coming to you guys from Seattle, Washington, in the United States. I just wanted to say hello. Really proud to be a part of this movement, the Panacea Yes, Yes, Yes global movement. It's Amanda Bobbitt here, founder of the Laptop Lifestyle Masterclass, and soon to be appearing on CBN, NBC, Fox, and Lifetime Television. So look forward to seeing that interview soon with Jack Canfield. Today I want to tell you about Asia and the Panacea H2O Yes, Yes, Yes movement, global movement. These founders are exceptional. I've been working with them for the past few months, and the teams there in India are growing exponentially. And they're just so fun to work with. So if you have not got a chance to see their talk show about this amazing water and what they're doing out there in the world, you must check them out. I highly recommend them. Until I see you, be happy, be healthy, and be free. Hello to my Panacea H2O ENAGIC family. This is Dr. Tamia Bethel Williams, one of the Panacea H2O mentors, I may add, and I am coming to you live from New York. I'm super excited to be here with you all on this beautiful, beautiful 5th anniversary, and I'm wishing you true health, true wealth, and peace of mind. You truly deserve it. Let's just come together and let's unify, and let's make this year ENAGIC's best year ever. Together, we can do it. So I'll see you guys at the top. Bye for now. Yes, yes, yes. All right, everyone. Yes, yes, yes. Thanks so much for joining in. Today we're going to have a very special one. This is Anil Shetty. I'm going to be the facilitator today on behalf of Panacea H2O team. And this is the 54th week, ladies and gentlemen. 54th week here, and relentlessly we are working for the last more than a year now. And thanks to entire Panacea team, Panacea Gold Action team, PGAT, as you all know. So today is going to be a very, very special सेशन. आज का जो सेशन है बहुत ही डिफरेंट और यूनिक होगा क्योंकि क्वेश्चंस आपके तरफ से आएंगे और हमारे पैनलिस्ट जो पावरफुल पैनलिस्ट है leading from Panacea H2O CEO, founder CEO Shashidhar Ji Iyer sir, and our entire Panacea Gold Action team. So Santosh Kumar Tiwari sir is 6A4, ladies and gentlemen. 6A4 ranking mein hai wo, and Rajesh Kumar sir 6A2, BR Patil sir 6A2, Naveen sir 6A2, and Chinnappa sir rank 6A, and of course Shashidhar Ji Iyer sir, as you all know, 6A2-2 global rank. So ये आज हमारे पैनलिस्ट हैं. तो आज का क्वेश्चन होगा ट्रू हेल्थ एंड वेल्थ के ऊपर. So before we start, I really want to set the context. मैं चाहूंगा कि आप कोई भी बीमारी के बारे में ना पूछें, कोई डिजीज के बारे में कोई क्वेश्चन ना पूछें, क्योंकि इनमें से जो भी पैनलिस्ट है कोई भी डॉक्टर नहीं है. ये सारे ट्रू हेल्थ मैसेंजर्स है. तो मैं चाहूंगा कि आप अपने क्वेश्चंस जो है वो चैट बॉक्स में डालेंगे, और हमें लगता है कि ये पूछना चाहिए बिकॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम ये सारे पैनलिस्ट एक साथ एक पर्टिकुलर शो में लेके आना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि आपको सबको पता है, राइट. सो क्वेश्चन एंड आंसर होगा ट्रू हेल्थ एंड ट्रू वेल्थ. जैसे कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिजनेस के बारे में, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कैंगन प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि प्राइस ज्यादा है, प्राइस में हमें रिजेक्शन आते हैं. वैसे सब एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ. सो प्लीज रिक्वेस्ट है कि कोई भी लोग अपने बीमारी या डिजीज के बारे में ना पूछे.
जैसे कि मैंने बताया डॉक्टर्स यहाँ पे नहीं है, नहीं तो ये पूरा शो डिजीज और बीमारी के ऊपर चलेगा. Whereas the Panacea H2O is really a true health messenger है, true health and wealth. तो हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे, डिजीज के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, right? So before we move on, I would really request Founder CEO Shashidhar ji, sir, if you want to have a few words before we kickstart this amazing, one of its kind, rapid fire question and answer. Over to you, Shashidhar. Thank you, Anil ji. Yes to each one of you here. Are you excited? Please type in the chat box. You are excited. Panacea H2O as a platform, we are trying to reinvent ourselves. We are trying to bring new concepts, innovations, value teachings and learnings forward for each one of you to consistently keep up this excitement and momentum. So for a change today, we have decided today the hero is the audience. Each one of you sitting on this platform, I believe you should clap for that. Type clap, clap, clap. Today, y'all are the heroes. We are not the heroes. So each one of the participant, जो intelligent question पूछेगा, the best question पूछेगा, हम उन लोगों को अलग सा recognition देंगे इस platform से as being the most intelligent distributor, intelligent question के लिए. Does that make it exciting? तो be alert. और आज के जो पैनलिस्ट है कोई भी ऑर्डिनरी लोग यहाँ पे है ही नहीं. एवरीबडी 6 एंड अबव, 6A2 एंड अबव. किसी का 500 के ऊपर का टीम है, 1000 के ऊपर का टीम है, 5000 के ऊपर का टीम है. सो दीज आर द एक्सपर्ट्स. उन्होंने कितने डेमो किए होंगे, कितना एजुकेशन लिया होगा, कितना ट्रेनिंग लिया होगा. सो दे हैव बीन विद ENAGIC फॉर अ लॉन्ग टाइम. दे हैव बीन कंसिस्टेंट. देयर आर लॉट ऑफ सीक्रेट्स दे कैन अनफोल्ड. Why they have been successful? Because everybody starts with a 0A in this company. So like the way few years back we started at 0A, probably कुछ लोग आज 0A में होंगे, 1A में होंगे, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, and you know so on and so forth ये होगा. But these are the people with experience and these are the people with wisdom. तो इनसे हम क्या पा सकते हैं? हम इनके 5 साल 6 साल के ENAGIC का तजुर्बा पा सकते हैं. We can learn from their experiences. यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो डेमो करने गए और आपका ORP मीटर काम नहीं कर रहा है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. आप डेमो करने गए, आपका ORP मीटर चल ही नहीं रहा है, वो बहुत स्लो चल रहा है, वो अल्कलाइन पानी को एसिडिक दिखाता है. ऐसा कभी अनुभव लिया? वाओ, देयर इज समबडी लाइक मी. तो मैंने ये अनुभव लिया है और आप इमेजिन नहीं कर सकते. दे वर मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्री के लोग थे. मेरे जिंदगी में पहली बार अकेला डेमो करने का कोशिश किया विदाउट माय वाइफ एंड इट वाज अ मेसी अफेयर. 9.5 शोड एसिडिक. सो यू कैन अंडरस्टैंड. वो लाल हो गया था 2.5 की तरह. तो यू कैन अंडरस्टैंड. एंड देन यू, आई डोंट डू डेमोस, आई वाज एक्सेप्शनल टू दैट. तो मैंने पहले बता दिया था. तो इट वाज ओके विद देम. दे टुक इट इन द स्ट्राइक. बट आई एम टेलिंग यू दिस हैपेंस. Just like Michael Saw, the seasoned campaigner at the age of 65, he started ENAGIC from Malaysia. उन्होंने sharing किया था. What did he share? When he went for a demo, he did not have application forms. कितने लोगों के साथ हुआ है ना? आप जा रहे हो, आपके पास PH टेस्टर नहीं है. How many people keep typing I? ये सब गलतियां हम करते हैं. हम एक्सपेक्ट करते हैं अपलाइन पूरा बैग लेके आएगा, अपलाइन ORP मीटर लाएगा, अपलाइन कैलिब्रेट करेगा, अपलाइन पानी भी सही निकालेगा, पानी टेस्ट नहीं करेंगे, है ना? तो इवन डेमो का पानी प्लस कस्टमर को, क्लाइंट को पानी देने के लिए भी हम लोग अपलाइन से एक्सपेक्ट करते हैं. दिस हैपेंस व्हेन वी आर न्यू. बट आई एम टेलिंग यू, all the people over here, today is a wake up call for all of you. Today we are going to make it very real, very truthful, very amazing, a real life journey. Are we together? Please type yes, yes, yes. Are we together? Please type yes, yes, yes before we take on the proceedings for the day. And with this, to the super host on the ENAGIC platform globally, that is Anil Shetty for you. Over to Anil. Thank you. Well, thank you so much, Shashi sir, for setting that context. So all panelists, sir,
you want to, kind of say a few words before you move on with the question. So can we start with our panelists, if they could say a few words before we get down to the question. So let's start with 6A, Chinnappa sir. Yeah, thanks, Anil. It was a wonderful, this is a beautiful session, like what you have, this is planned up. As Shashi Ayerji just mentioned, when a person starts, he always starts with the first step. Nobody jumps to the 100th step all of a sudden. I just want to share is one of my experience, one of my very first demos. Okay, the micro clustering. I did that with his 11.5. Okay. So then later, usually you give us that the tea for tasting. Then I realized okay, no, I shouldn't give it for tasting. So I just held back. So this was the one of very first mistake what I made. Okay, and till date, I've done a lot of demos. I never repeat that mistake is once again. Okay, so this is we all do is a lot of mistakes. Let us learn from those mistakes so that we don't repeat it the same thing. So today, welcome everybody. So welcome to the show. I think it's going to be the amazing one. So back to you. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Let's hear from Santosh Kumar Tiwari sir. Few words from you, Santosh sir. आगे बढ़ने से पहले. Okay, Santosh ji ko unmute. Sir, I think Santosh ji hai. I doubt. I think he's not there. Anyway, B.R. Patil sir. Yeah. B.R. Patil sir, few words from you before we move on with our rapid fire question answers. आप unmute कर सकते हैं, B.R. sir. Okay. I think let's go to Naveen sir. 682, Naveen sir. Few words from you before we kickstart. Thank you, Anil. Yes, sir. Today, for the first time, we're having a Q&A session. And it's nice to be sitting on this hot chair today. I know Anil will be throwing a lot of us. And yes, this platform adds a lot of value for us to learn things and overcome objections. I do remember she was sharing about his first experience. Yes, I do have one too. When I went for my very first demo, and the opposite person, when I asked him to get his tap water, and when I put the pH tester into that turned into blue. And I was shocked. I was fumbled. I was not in a position to what to tell, because that was my first demo. And yeah, that time I wasn't knowing that government treated water, normally they maintain the pH over there. So I had to fumble. That was my first experience. But now this kind of platform, it helps us a lot. And thanks for this Q&A session. All right, great. Thank you so much, Naveen sir. We're looking forward to have an amazing conversation today with all our panelists. Let's go to Rajesh Kumar sir. Let's hear from Rajesh Kumar sir. Rajesh ji hai? Not there. Not there. Is it because the question answer aane wala isliye answer? They may join in between. All right, no worries. So anyway, you have heard from Shashi sir, already. Okay, so all participants here. So if you could post your questions on the chat box, and we'll pick that question, and it will be directed towards our panelists accordingly. Yep. So please go ahead. अगर आप अपने chat box में questions डाल देंगे, that'll be really helpful, because we cannot unmute if we go there route. It will be a little messy there. So please आप अपना questions जो है आप अपने chat box में डाल सकते हैं यहाँ, and हम questions को panelists से answer लेने की कोशिश करेंगे. Yeah. अगर आप questions नहीं पूछते तो शशि सर और मेरे पास तो questions है. All right, ladies and gentlemen, please shoot the questions on the chat box. Okay, nobody? कोई question ही नहीं है. Wow. Yeah, please type a question, or shall I unmute you? Okay, Rajesh ji aa gaya. Acha, before we go on, so okay, Rajesh ji, if you could share a few words from you before we get on into question answers.
एब्सोल्युटली एक्चुअली मैं सुन रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये सिग्नल का थोड़ा इशू था, और आपने बताया कि क्वेश्चन आंसर है, इसके लिए हमने कोशिश की अवॉइड करने की, बट आई लव दैट थिंग बिकॉज हमारे ये 5-5.5 साल के जो एक्सपीरियंस रहा है, उसमें मेरे साथ में जो इंसिडेंट रहा है वो ये रहा है कि जब मैंने फर्स्ट डेमो किया था तो आई वॉज मतलब ऐसा था कि आई वॉज सो इनथू कि ये मशीन मैंने लगा ली, और जब किसी के पास जाऊंगा वो कूद के मेरे पास मशीन लेगा, ऐसा एक मिरेकल डिवाइस मेरे पास है। ये हर एक नए बंदे के साथ अक्सर ये होता है कि क्योंकि उसने उस तरीके का डेमो देखा होता है, और वो जब उस माइंडसेट में उसने मशीन लगाई है, लेकिन वो जब किसी को प्रेजेंट करने के लिए जाता है तो उसके मन की जो भावनाएं होती हैं वो ऐसा होता है कि मैंने प्रेजेंटेशन किया और उधर से चेक मुझे फटाक से मिल जाएगा, और वो चीज होती है जो मुझे भी ऐसा लगा, और मैं मेरे ब्रदर के पास चला गया, माय रियल ब्रदर, कि यार ऐसी एक मशीन लगा ली है और ऐसा है, ऐसा इसका पानी ऐसे मेरे से, और उसके बाद वो मुझे बोला, बेवकूफ आदमी, ऐसा कुछ होता है 2.5 लाख 3 लाख की पानी की मशीन। और जब उसने वो बोला तो जितना जो मेरे अंदर सोडे का पानी था वो सारा कुछ निकल गया। यही ज्यादा करके लोगों की हालात होती हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये जो सेशन रखा है, शायद मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, ये स्किप कर सकता था, लेकिन पर्पसली मैंने गाड़ी साइड में लगा के ये सेशन को अटेंड किया कि इसमें बहुत सारे नए लोग होंगे जिनको ये क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा क्या होता है कि जब आप बताते हैं तो हो जाता है और नए हम बताते हैं तो वैसे रिजल्ट नहीं आते। तो दैट इज माई एक्सपीरियंस। तो नए लोगों के लिए ये चीज डरनी नहीं है, इट इज अ प्रोसेस। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो वो अच्छी बात है, दैट इज अ गुड सिग्नल। तो आपको और ज्यादा सीखने की जरूरत है। थैंक यू शशि जी एंड शेट्टी सर, नाउ यू कैन टेक इट। जब कोई सवाल है तो डेफिनेटली वी विल आंसर। ऑलराइट, सो अगेन पार्टिसिपेंट्स, मैं चाहूंगा कि क्वेश्चंस को आप बिजनेस एंड प्रोडक्ट एंगल दोनों रखें। ट्रू हेल्थ इज द कॉन्टेस्ट, द कॉन्टेक्स्ट, एंड उसी हिसाब से, बिकॉज सारे पैनलिस्ट यहाँ पे है, और नेक्स्ट 1 hour 15 minutes, यू नो, प्लीज यूज इट ऑसम, बिकॉज ये हमारे पास ये लिबर्टी या फ्रीडम नहीं था जब हमने कैंगन वाटर का बिजनेस शुरू किया था या कैंगन वाटर प्रोजेक्ट को हमने शुरू किया था। तो यू ऑल आर लकी हियर, all are 6A and above people are there, so please try to ask all intelligent questions, and intelligent questions सबका best होगा, जैसे शशि सर ने बताया कि that person will be recognized on this platform for sure, right? So we'll go with the first question, probably Chinnappa sir, you know, really like if you could take that question. What's the best pH to be used regularly? That's the question coming from the participant now. Okay. I'll just mention, like today, like we had a beautiful session in the morning. It was organized by PGAT and the company, where they explained us how those machines work, okay, and also the cleaning pattern. Okay, so when I speak about this question, like basically, if I take this question to answer this question, so I'll just read that question for you. What is the best pH water to use regularly? See, there is nothing called as a pH regular, because like what happens is like either like we use a tap water or a municipal water or a well water, or like even the bottled waters, that is the canned waters. So when we speak about is the pH in that, so basically if you see, we are speaking about the TDS. Don't even worry about like what is the pH in that. So if the TDS is between around 100 to 300, and preferably in the morning session when they mentioned, they said is between 100 to 150. Okay, if that is the TDS of the water, which means like it speaks about the hardness in the water, that water getting into the machine will give you as a pH, the output of the pH, it will start with 8.5, 9 or 9.5. That is called as a KANGEN water, which comes out of that. So kindly do not worry about the pH of the input water. Kindly worry about the TDS, what the water carries. Provided it should be is between 100 to 150. So the Indian scenario, it says between 100 to 300 is okay for us to drink. But the machine today, like technical department from ENAGIC, they mentioned like preferably let it be around 100 to 150. Even if it is 200, 300 also, the machine can handle. I hope like that answers the question. Thank you. Okay, you know, if you are satisfied with the answer, you can put satisfied. If not, you can put more questions because we have panelists here. Let's go to Rajesh ji. Rajesh ji, second question आया है, K8 machine 4 हफ्ते हुए हैं, and जो result है
host main and the gray host and the white host का 70-30 होना चाहिए as per the company standards, but the gentleman here is getting 50-50. सिर्फ 4 हफ्ते हुए मशीन और 50-50 आ रहा है वाटर के आउटकम. So उसके ऊपर आप कुछ अनफोल्ड करना चाहेंगे यहाँ पे प्लीज. सो अनम्यूट करना पड़ेगा आपको सर. सॉरी यस हाँ ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा टेक्निकल है. आई थिंक ये जो इंस्टॉलेशन का जो बंदा है जो एक्सपर्ट है शायद ये आंसर उसके पास परफेक्ट होगा बिकॉज ये टेक्निकल इशू है. इंस्टॉलेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है सर. All right. So basically, you may have to check the installation thing here. Yeah. Bia Patil sir, you want to take this question further? Bia Patil sir, सवाल ये है कि the Radhakrishnan sir has taken a machine since 4 weeks, and the first time he measured the water, it was 50-50 आ रहा था, 70-30 होना चाहिए. तो 50-50 आया तो उनका question है कि what further action he should take here? Bia Patil sir. Yes. So very good question. Actually इसमें दो चीज हो सकती है. एक है कि उसका जो एसिडिक जो फॉसेट है, एसिडिक पाइप है, वो प्रॉपर लगाया नहीं होगा. दैट इज वन, ये चांस हो सकता है. दूसरा चांस हो सकता है कि जो 50% जा रहा है, इसका मतलब वेरी सिंपल, उसका जो वाटर फ्लो है इट इज नॉट अ प्रॉपर वाटर फ्लो. डेफिनेटली उसको बढ़ाना पड़ेगा. दैट इज द मेन रीजन. बिकॉज क्या होता है 50-50% आ रहा है, इसका मतलब जो पानी का फोर्स है वो ऊपर के फॉसेट से नहीं आ रहा है. ओके, सो दिस कुड बी द वन रीजन. Okay, so what should he do? Chinnappa sir, yeah, over to you, Chinnappa sir. तो उसमें एक सॉल्यूशन देना चाहता हूं मैं, सिंपल, बिफोर द चिन्नप्पा. सो इसमें एक बात है कि उसका फ्लो बढ़ाने के लिए अनिल जी एक सिंपल है कि उनको इधर एक वाटर पंप लगाना चाहिए जो छोटा सा होता है. वो लगाने से उनका ऑटोमेटिकली एक्चुअली स्पीड बढ़ जाएगा पानी का. तो उनका जो ये 50-50% का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. या ओवर टू चिन्नप्पा. All right, great. Thanks, Rajesh ji and Bia Patil sir. Yes, over to you, Chinnappa sir. Yeah. Anil, thanks, Bia. To answer the specific things, like when you're getting the 50-50, that is the primary, and the second, you're getting the 50-50, that is the equal quantity. Again, today I'm mentioning is about today morning session from the company. You should be getting, if it is all the things are working fine, you should be getting a 70 in the primary and 30 in the secondary. So in case if you are getting this 50-50, I think as he mentioned the 4 weeks old, it is due for a e-cleaning. Kindly do your e-cleaning. So if you do your e-cleaning, the calcification can be removed out. So again, like you can have that 70-30 coming in. And second one, kindly see like how you have installed your machine, whether you have installed it on a flat surface. Hope the machine is not on top and the secondary pipe is dropping down. See that the secondary pipe is parallel to the machine so that like the water flow is perfect. Kindly do your e-cleaning. I think like most of things can be sorted out. Thank you. All right, fantastic. So hope Radhakrishnan sir, you got the answers. So ये जितने भी यहाँ पे suggestion हुआ है, अगर आप इस पे अमल करेंगे तो definitely it will be solved. And anyway, you have ENAGIC support, www.enagic.co.in. You can reach out to them anyway. And of course, your sponsor is very important. And we are there as Panesia to help you out as well in case you continue to see this problem. All right. Okay, next question coming from the panelist to the panelist. Chinnappa sir, what are the preparation required to do my KANGEN demo independently? All right, let's go to BR Patil sir here. BR Patil sir. Okay. So Chinnappa, what is what preparation he has to do for the demonstration? Now, what are the preparation required to do my KANGEN demo independently? मतलब applying के बिना मेरे ख्याल से. Okay. Yeah, Mr. Chinnappa, very good question. जैसा हमें 5 साल के पहले ही याद आ गया कि हम कैसे इंडिपेंडेंट बने थे. मेरा जो अपलाइन है शायद चिन्नप्पा को मालूम नहीं होगा. मैं अपलाइन से समीर पोद्दार और हमारा जो रहने का आई स्टे इन अंधेरी मुंबई, ही स्टे इन थाने. देयर इज अ 25 किलोमीटर एक्चुअली डिस्टेंस. सो जब भी मैं एक्चुअली डेमो देखना, मेरे पास डेमो आता था तो उसको टाइम लगता था समीर जी को आने के लिए. ओके, सो इंडिपेंडेंट में कैसे बना? वेरी सिंपल, मैंने काफी डेमो ऑनलाइन देखा. दैट इज द वन थिंग.
और वो ऑनलाइन देने के बाद काफी एक्चुअली मुझे नॉलेज मिला कि कैसा हम डेमो कर सकते हैं. दैट इज वन थिंग. सेकेंड, जो भी डेमो हम लोग करते हैं, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग इनिशियली. सी दिस इज जस्ट स्टार्टिंग के लिए. आपको इंडिपेंडेंट बनने के लिए आप तीनों चीज लेके जाओ. ORP मशीन, आपका PS टेस्टर, माइक्रो क्लस्टरिंग के लिए यू कैन टेक अ ग्रीन टी, एंड इमल्सिफिकेशन के लिए आपको यू हैव टू टेक द ऑयल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बिफोर गोइंग टू द डेमो यू हैव टू चेक योर बैग कि ये चीज आपके पास है या नहीं है. आपके पास बुक्स है तो ठीक है, नहीं है तो अरेंज कीजिए. बुक्स रहेगा तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है. बिकॉज वी से ऑलवेज 3, हम 3 बुक दिखाते हैं. ओके, एक होता है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, सेकेंड एंजाइम फैक्टर जो भी है, और सेकेंड थर्ड वाज व्हाट, येलो, ब्लू एंड रेड. 3 बुक दिखाते हैं. दैट इज अगेन बहुत सारी चीज है उसके पीछे. वो एक चीज है. तो आपको इंडिपेंडेंट डेमो दिखाने के लिए आपको यू हैव टू बी एक्चुअली ना प्लान. आपको जाना ही पड़ेगा एंड यू हैव टू शो द डेमो विदाउट फियरिंग. क्योंकि जस्ट आई वांट टू टेल माय सीक्रेट. इनिशियल स्टेज पे मुझे काफी साइंटिफिक एक्चुअली जो भी वर्ड थे पता नहीं थे, बिकॉज आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट. लेकिन मैंने सेल्स का आदमी होने के कारण मैं कभी उसमें डरा नहीं. जाके मैं डेमो देता था. इनिशियली मुझे स्ट्रगल हुआ, नो डाउट. क्लोजिंग मेरा एक मेरे पास एक्चुअली उसका ट्रिक था, तो क्लोजिंग में कर लेता था. ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो चिन्नप्पा जी, इसमें कुछ नहीं है. जो यस, यू गो ऑन द फील्ड, नथिंग एल्स. आप बैटिंग करते रहो, अपने आप सीख जाओगे. मेरे अपलाइन से, मतलब अगेन दिस इज रिकॉर्डिंग, ये आई डिड इट ओनली 4 to 5 डेमो, दैट्स इट. 4 to 5 डेमो किया. उसके बाद में मैंने बोला कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है. And I started my demo. Fantastic. I hope, Chinnappa. Fantastic, Via Patil sir. Thank you, और राजेश जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? राजेश जी. नहीं, अगर चिन्नप्पा जी का सवाल अगर मुझसे होगा तो डेफिनेटली मैं इसमें कुछ बात करना चाहूंगा. जी. चिन्नप्पा जी से मुझे थोड़ा सा पूछना है. He want me to answer this thing? Yes sir. ओके. सबसे पहले जो जैसे उन्होंने बताया कि प्रिपरेशन, एक चेकलिस्ट, सिंपल सी चीज है, एक चेकलिस्ट बना लो. जैसे हम कोई पिकनिक पे जाते हैं, किसी फंक्शन पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, यार मेरा पासपोर्ट है या नहीं, टिकट्स मेरे पास है, मैंने आईडी लिया है कि नहीं. ठीक उसी तरह से हर कोई डेमो को आप बहुत सीरियसली लीजिए. बिकॉज डेमो नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये चीज. क्योंकि एक बंदा, वो जिसको आप डेमो देने जा रहे हो, वो मिस्टर शशि अय्यर हो सकता है, वो मिस्टर अनिल शेट्टी हो सकता है, वो समीर पोद्दार हो सकता है. तो पूरी प्रिपरेशन, जैसे आपको, मतलब आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है उस डेमो के बाद, इतना सीरियस आपको रखना पड़ेगा. सबसे पहले तो आपको फ्रेश वाटर, तो आप देखिए कि आपका ORP आ रहा है या नहीं आ रहा है. आंख बंद करके डाल दो कि चलो आता ही है, डोंट टेक चांस. दूसरी चीज, 11.5 इमल्सिफिकेशन हो रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत ध्यान रखना पड़ता है. लोग 11.5 प्रेस करके निकाल लेते हैं, जो इमल्सिफाई तो होता है लेकिन वैसे नहीं होता जैसे होना चाहिए. तो उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से प्रेशर को कम करना पड़ता है, और ये श्योर करना पड़ता है कि यार बिल्कुल दूध जैसा दिखा है कि नहीं. बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन, बिकॉज उस क्लाइंट के पास आपको बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है प्रेजेंटेशन करने का. जब आपको ये प्रेजेंटेशन का मौका मिला है तो डोंट टेक एनी चांसेस, क्योंकि ये मौका जिंदगी में दूसरी बार वो नहीं देगा. दूसरी बार आपके पास कैंगन सुनने के लिए वो नहीं आएगा. तो द ओनली चांस यू हैव कि आपको 100% वो एश्योर्ड करना पड़ेगा कि आपका 11.5 एक आई ओपनिंग चीज होती है जो सबसे बेस्ट होती है. उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखिए. सेकेंड थिंग जो पाटिल जी ने बताया सेम, कि अगर आपके पास बुक्स हैं, आपके पास किलिंग कैंसर है, आपके पास एंजाइम फैक्टर है, माइक्रो फैक्टर है, ये 3 बुक हमेशा कोशिश कीजिए, अगर नहीं है तो मंगवा लीजिए या अपने अपलाइन से ले लीजिए. ये बुक आपको ये एविडेंस करके दिखा रही है कि आप कोई नॉर्मल प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के लिए नहीं जा रहे हो, आप एज ए कंसल्टेंट करके जा रहे हो, और आपके पास ऑथेंटिकेशन के लिए वो सारी चीजें चाहिए. ORP को भी ध्यान में रखिए. बहुत सारे लोग, जैसे अभी शशि जी बता रहे थे कि ORP को हमने ऐसे ही ले गए कि चलो यार चलता है. नहीं, चेक कीजिए, उसको कैलिब्रेशन कीजिए, देखिए कि ORP आपका अप टू मार्क है कि नहीं है. आपका pH लिक्विड, बहुत जगह ऐसा होता है कि हम डेमो दिए हैं और पता नहीं कि pH लिक्विड बॉटल तो है लेकिन लिक्विड है या नहीं.
तो ये रेस्ट एश्योर कीजिए कि उसमें लिक्विड भी हो, है ना। और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि जिस प्रेजेंटेशन के लिए आप जा रहे हो पहले मेंटली तैयार करो कि बंदा है कौन, बिकॉज आपको पता होता है कि कौन सा बंदा है और आप इंडिविजुअल डेमो के लिए जा रहे हो। तो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उस तरीके की तैयारी है, अगर डॉक्टर है तो उस तरीके के, बिकॉज हर आदमी का अपना एक, लेकिन उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने मुंह उठाया और चलो ले गए, जो होगा देखा जाएगा। एवरी पर्सन इज मतलब करोड़पति, मिलियनर, बिलियनर हो सकता है। वो समीर पोद्दार भी हो सकता है, शशि अय्यर भी हो सकते हैं, शेट्टी भी हो सकती है, या राजेश कुमार भी हो सकता है। तो एवरीथिंग अप टू द मार्क। सबसे पहले मेंटल प्रिपेयर करो कि वो एक बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लेगा नहीं लेगा सेकेंडरी है, लेकिन आपके मन के अंदर आपका जो फोकस होगा ये होगा कि यस आई हैव द अपॉर्चुनिटी और मुझे इसको दोनों हाथ से ग्रैब करना पड़ेगा। थैंक यू। आई होप चिन्नप्पा जी को ये चीजें थोड़ी सी अच्छी लगेंगी। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत ही उम्दा पॉइंट कहा। यहाँ पे सारे पैनलिस्ट देखिएगा, हम लोग सेम क्वेश्चन मल्टीपल पैनलिस्ट को देंगे ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स मिले, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सट्रैक्ट कर पाए, राइट। सो देयर इज नो कंपटीशन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। सारे पैनलिस्ट के आंसर्स होंगे और हमें ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट राजेश जी ने कहा कि आपके पोटेंशियल कस्टमर के बैकग्राउंड को जानना बहुत ही जरूरी है, ना कि सिर्फ बैग उठा के चले गए, राइट। So that was amazing, amazing, Rajesh ji. So come, let's go back. Let's go to Naveen ji now. Naveen sir, there is a question on the follow-up skills required. What should be the follow-up skills required? And this question came for B.R. Patil sir. But now let's go to Naveen ji and let's hear from him. What are the follow-up skills required here in ENAGIC? Naveen ji, sorry B.R. sir. Sorry, Anil, come again, once again. Yeah. What are the follow-up skills required here in this business for us in ENAGIC? Okay. After doing the presentation, this is very important. Majority of the people, why they don't get sales is they don't do follow-up. After showing the presentation, in next 72 hours, we have to religiously, professionally, we have to do the follow-up. Most of the times what I have seen is people, one or two incidents where people have come up front with the check or they have swiped the card, but majority of the time people always they buy the time. And when they're taking time, we have to be, if you're doing this business seriously, we need to ask them when I need to get back to you, or is it okay if I call you tomorrow so that you get a time to discuss with your spouse, or is it okay if I call you like tomorrow evening so that you can be in a position to think over it. You need to ask them and you need to take an appointment when you have going when you want to like get back to them. If you don't do follow-up, nothing happens. Because in sales, 98% of the sales happens only on the follow-up. So today follow-ups is very important. Unless until if we don't ask them, they don't come back to us. And the human tendency, whatever we listen or whatever we see, we tend to forget in next 72 hours. So after showing the presentation, this 72 hours is very crucial. Some people, they have this inhibition. How do I ask him? Friends, we need to overcome this inhibition. You're not like putting the opposite person in a situation or something. You have shown him the product. Now you are asking him what's his opinion. And sometimes we have to like pitch in. Sometimes we have to help him in some ways to take decision by answering his objection. So for that, we have to get back to that person. We have to do follow-ups within 72 hours. It's very crucial. It can be over telephone. It can be like meeting him personally. It depends on the situation. Fantastic, fantastic, Naveen sir. Over to Rajesh ji. Same question. Rajesh ji, क्या follow-ups होने चाहिए? Follow-ups का मेरा ऐसा मानना है कि it depend on the client कि जिस भी शख्स को आपने प्रेजेंटेशन किया है वो क्या है और उसने लास्ट आपको क्या बोला था। जब तक आपको पता नहीं लगेगा फॉलोअप्स का मतलब मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा कि हर बंदे को एक ही तरह का फॉलोअप कर सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट इनटू सेल्स काइंड ऑफ थिंग. फॉलोअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बट डिपेंड ऑन द क्लाइंट. अगर कोई हाई पोटेंशियल वाला क्लाइंट है जिसके बड़ी मुश्किल से, जैसे अभी हम बात कर रहे थे मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं,
और उसमें फिर आपको घड़ी घड़ी वो चीजें नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूरी कोशिश ये कीजिए कि सारे जो चीजें हैं आपके डेमो के अंदर ही खत्म कर दें, बिकॉज क्या होता है कि वो वहां पे ही क्लिक होता है, बिकॉज वो पूरा अट्रैक्शन वहां पे है, पूरा माइंडसेट वहां पे है, और वहां पे अगर वो चीज समझ में आ गई तो कोशिश कीजिए। आई जब पर्सनली जब होता था, अगर आपके पास स्वैप मशीन है या आपके पास टोकन अमाउंट कुछ ऐसे आप कर सकते हो, ये मेरा तरीका है, आई डोंट नो सबको ये समझ में आएगा कि वो चीज उसके पास है, कुछ एश्योर्ड करके लो कि सर ठीक है, अगर वो कर रहा है और अगर उसको वो बोल रहा है कि ठीक है सोच के बताते हैं, तो वो जो बंदा है सोच के क्या बताने वाला है। सर एनी प्रॉब्लम, शायद कोई सवाल आपके ऐसे छूट गए जो आपको उसका आंसर नहीं मिला, मतलब फॉलोअप क्यों? अगर कोई चीज उसको समझ में नहीं आई तो कोशिश कीजिए कि वो चीज उसको उसी टाइम पे समझाइए, क्योंकि आपने 1 घंटा 2 घंटा दिया, उसके बाद आप बोलोगे, जनरली हम लोग थोड़ा सा कैजुअली बोलते हैं चलो ठीक है मेरा काम था, डेमो दिखा दिया, अब सर आप सोच के बता रहा हूँ, तो दैट इज रॉन्ग। वैसे केस में आप वो अपॉर्चुनिटी उसको दीजिए नहीं। दूसरी चीज, अगर उसने बोला है कि ठीक है हम सोच के बताते हैं, तो कोशिश उस टाइम पे कीजिए कि क्यों सर, मतलब कोई चीज आपको समझ में नहीं है या फिर आपको सलाह मशवरा करना है, तो सलाह मशवरा करना है तो सर मुझे ऐसा लगता है कि आप, ये जो प्रोजेक्ट है इसका मैं एक्सपर्ट हूँ और आपको इसके संबंधित जो जानकारी है वो कोई एक्सपर्ट ही दे सकता है। अगर आप अपने पड़ोसी से, आपके फ्रेंड से अगर आप पूछ के कुछ करना चाहते हैं, या आपकी फैमिली में जिन्होंने डेमो नहीं देखा, सर ये डेमो आपने नहीं देखा था तो शायद आपको भी, अगर मैं वर्बली समझाता तो शायद आपको भी ऐसा लगता था एक मशीन है, ऐसा पानी आता है, वैसे पानी आता है। ठीक उसी तरह से आप किसी ऐसे आदमी से पूछने जाओगे जो ऐसे ही जवाब देगा। तो आपने ये डेमोस्ट्रेशन देखा, आपने ये इमल्सिफिकेशन देखा, आपने ये येलो और ब्लू पानी देखा, तो मेरी ऐसी इच्छा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और डिसीजन मेकर है तो वी विल हैव अरेंज, उनके लिए भी हम ये करेंगे और ये प्रेजेंटेशन हम उनके लिए स्पेशलाइज करेंगे अगर उनको ऐसा लगता है। या फिर अगर कोई बोलता है कि ठीक है यार अभी पैसे का प्रॉब्लम है, मेरा कुछ 25 तारीख को आएगा, 30 तारीख को आएगा, तो आपकी कोशिश ये रहेगी कि उस बंदे को रेगुलर इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते रहो, अगर आपको लगता है कि वो 25 तारीख जेन्युइनली बोल रहा है ना। दूसरी चीज ये आती है कि, और इसके लिए मैं बोलता हूँ ना, इसका कोई पैरामीटर फिक्स नहीं हो सकता, ये डिपेंड केस टू केस बेसिस के ऊपर ही हो सकता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। और फॉलोअप्स में आप रोज सुबह फुल उठ के उसको फोन करोगे, क्या हो गया भाई, डिसाइड किया क्या है, तो वो थोड़ा सा कैंगन के कैलिबर को सूट नहीं करता, जो मुझे लगता है। आप उसके हिसाब से देखिए कि व्हाट इज द कस्टमर, जेन्युइन है या नहीं है, वो थोड़ा सा आपको आते आते ही आएगा। फर्स्ट टाइम पे आप एक्सपर्ट नहीं होगे, लेकिन आप अपना काम डेमो का कीजिए। लोगों को जिसको डेमो दोगे उसको एक ऐसे आपका ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए जिसमें रोज फॉलोअप कीजिए, और उनसे थोड़ा सा अगर इंटरेक्शन कर सकते हैं तो हमेशा ये मत पूछिए सर मशीन का क्या हुआ, तो उसको ये समझ में आएगा कि ये बंदे को बहुत ज्यादा मशीन बेचने में इंटरेस्ट है, क्योंकि हम लोग जो बता रहे हैं वो हेल्थ है उसकी फैमिली के लिए। तो मेजोरिटी ऑफ केसेस आप अपने आप का टाइम जो है डेमो में जब आपको मिलता है, गिव योर 200%। ये फॉलोअप की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अगर फॉलोअप की नौबत आती है तो समझ लीजिए कि आपका केस 50% हाथ से निकल गया है। और क्या जेन्युइनिटी रीजन है फॉलोअप्स के लिए, अगर वो बाद में बोल रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ सवालों को सिर्फ उसने बोल दिया और आप सुन के निकल गए, दैट इज नॉट अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू मी। आप कोशिश कीजिए उसी वक्त, बिकॉज उस टाइम पे डेमो देखा, उस टाइम पे उसकी फैमिली साथ में है, तो वो चीज कीजिए। अगर फॉलोअप के लिए वो कोई पर्टिकुलर टाइम दे रहा है तो उसी टाइम पे फोन कीजिए, लेकिन उसके साथ संपर्क बनाए रखें, उसके साथ रेगुलर इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए कैंगन के रिगार्डिंग। मॉर्निंग विश किया, कैंगन मॉर्निंग विश किया, और साथ में ये सारी चीजें भेजिए ताकि उसके दिमाग में रहे, हाँ यार कैंगन है, लेना है। और वो इंफॉर्मेटिव जो सेशन, जो इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हो वो देखिए कि वो आपके पास 100 आए तो 100 मत भेजो, रिलेटेड क्या है, उसके हेल्थ के रिलेटेड क्या है, या अगर वो बहुत फाइनेंशियली वीक है तो उसको ऐसी ऐसी पिक्चर्स भेजिए जिसके अंदर बहुत गरीब तबके के लोगों ने मशीन लगा रखी है, तो वो अपने आप को रिलेट कर पाता है कि हाँ यार इसने भी लगा ली, इसने भी लगा ली। अगर बहुत हाई क्लास में है तो उसको आप गडकरी साहब का फोटो या ऐसी ऐसी चीजें, अरे बाप रे लोग भी लगा दिए। तो मेरे हिसाब से इट्स डिपेंड ऑन केस टू केस। थैंक यू वेरी मच। All right, great, Rajesh ji. Thank you so much. So let's take a pause here. Are we all getting the value?
How are you finding this session, ladies and gentlemen? If you put really finding value, please type value on the chat box. Please type value in the chat box. The fantastic panelists we have today, all our 6A and above leaders here, ladies and gentlemen. All right, great, 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 fantastic, fantastic. All right, let's go to this question coming from one of the participants. What should be the closing punch? Over to B.R. Patil sir. Closing punch क्या होना चाहिए डेमो के बाद? B.R. Patil sir. Okay, that's a very good question again. क्लोजिंग पंच ऐसा है कि जाते समय बहुत बार हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी राजेश जी ने बताया कि डेमो देखने के बाद हम बोलते हैं ठीक है सर आप बताइए मुझे बाद में, तो वो चीज कभी भी नहीं होनी चाहिए। निकलने के पहले हमें चेक मांगना बहुत ही जरूरी है। सर पेमेंट कैसा करना चाहोगे, आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहोगे या आप चेक देना चाहोगे या कैसा करोगे, ये बहुत जरूरी पूछना है आपको। साथ साथ में अभी तो ऑनलाइन फॉर्म हो गया, अदरवाइज आई यूज्ड टू कैरी द एप्लीकेशन फॉर्म, हमें उससे एप्लीकेशन फॉर्म साइन करके लेना चाहिए, लेकिन अभी ऑनलाइन होने के कारण हम लोग नहीं ले सकते। लेकिन आप क्लोजिंग पंच वेरी सिंपल, उसको आप ये मत पूछिए कि आप कभी बताओगे कभी बोलोगे, ये वर्ड नहीं यूज करना है। सर आप बताइए सर आप कैसा पेमेंट करना चाहोगे, वेरी सिंपल। सब लोगों को जिनको भी एक्चुअली पता नहीं होगा तो ऑनलाइन भी पेमेंट हम कर सकते हैं। आपको वेबसाइट ओपन करना है, मोबाइल पे भी कर सकते हो, आप स्टोर में जाके आप जो भी प्रोडक्ट जो भी मशीन है उस पे जाके क्लिक करके हम पेमेंट कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। ये पता नहीं होगा तो आप ये देख लीजिए enagic.co.in में जाके, आपको ये बहुत ही जरूरी है। और कभी भी निकलते समय कोई भी क्वेश्चन मार्क छोड़ के नहीं निकलना है। आप में वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि यस मैंने जो भी काम किया बहुत बढ़िया किया है और ये मशीन लेने वाले हैं। Cool. I hope actually इसमें Great, B.R. Patil sir. Let's go to Naveen sir. Naveen sir, what should be the closing punch after the demo, according to your experience? Naveen sir. As Bia was sharing, yes, after the presentation, we need to ask them. Normally, like always, I ask them, I give them an option. Whether you want to go for KAD or Super 501. And with me, most of the time, people have settled for SD 501. And this thing is like, it's whether two machines or three machines. If a person is married, if a person has got a son or daughter, always ask them like, you want to gift, I mean, anyhow, I put it across in such a way, like I make them feel that they have already bought it, whether you want to buy one more for your daughter or son. So my question is like, whether you want to buy 2 or 3. And 80% of the people, they will buy 1. So normally I don't ask them like, when are you going to pick up or when should I get back? Always I give them an option of like between the machine and the number of machines. Fantastic. Fantastic. Wow. What an attitude here. आपने बताया था Naveen sir, let's maintain the posture and the attitude. A great point coming from all our panelists here. Let's go to Chinnappa sir. Chinnappa sir, what should be the closing punch after the demo, according to your experience? Chinnappa sir. Yeah, thanks, Anil. I hope, like, with all due respects to his BR and Naveen for whatever the closing techniques they have put across. Today, like when I speak about is when I speak about is this product. Okay, so we are dealing with is a high value product. This is a product like where there is a need and urgency. See now, like today, always like can sit in front of the prospect with the right attitude that like you are going to educate him and see that awareness has been created. So you have done that, like the prospect has found a value. Your eyes, ears, all the organs should be is quite wide open. You need to take out as those 1 or 2 points which he would have asked a question, stick on to that question. And you say, tell them this water is going to change your life. Ask them whether do they feel the same. If the answer is yes, please ask them, how do you want to make the payment? As B.R. Patil said, give them the option of choosing the payment. Don't never ask a question, as Naveen said, like when do you want to buy it? Give them the option of choosing, how do you want to make the payment?
Okay, kindly see that you ask that question, because a lot of people, they do is a beautiful demo, but they forget to ask that payment because people fear. People fear if I ask him a question, like he will say or no. Anyway, like he's decided, if he wants to say or no, he would already decided. But this question of asking him, how do you want to make the payment, will always trigger him, and he put him on the back foot, and he will have to answer you because you have put the ball into his court. Kindly ask this question. You have done is a beautiful demo, and I think like you have is all the right to ask a question. Please ask a question. You need to ask a question. And in case, see now like what happens, you have shown is a demo. All the people will not pick up the machine at the spot. Some people need time. Maybe it is a week's time, 1 month, 6 months, 1 year. You categorize your people. You have to categorize your people. Hot, warm, and the cold. All the people are very, very important. If it is hot, hit it very hard. If it is warm, get him into the hot position. It is just a matter of time. If it is cold, wake him up. But never forget to ask a question, how do you want to make the payment? And as Naveen said, you give him his option. Don't give him his, all the machines like what you have. Don't tell him like you can choose anything. You say for your family, for this family, you will need is a 7 plate, 8 plate. Give him his only 2 options. Let him choose. When you give us too many options, he finds it difficult to choose. Give him 2 options according to you, like what is best suited for him, and give him the option. Payment, I would prefer is by way of his transfer, online transfer, a card payment, or as a check. Give him that options. I think that is how the closing has to be is done. If you don't ask for as a closing, you will never be able to sell a machine. Please ask this question because the closing question is a must. Thank you, Anil. Thanks a lot. Okay, Chinnappa sir, let's go to Rajesh ji. Rajesh ji, closing punch demo के बाद क्या होना चाहिए आपके अनुभव से? मेरे हिसाब से क्लोजिंग पंच जो है, जब हम ये 3 प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, एवरी टाइम थोड़ा सा मेरा मतलब हमेशा सोच ऐसी रहती है कि प्रेजेंटेशन दिखाने का मतलब सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखाना नहीं है. जब हम पहली प्रॉपर्टी दिखाते हैं एंटीऑक्सीडेंट का, तो वो ओआरपी का तो चलो ठीक है, समझ में लोगों को आता है, और कि मतलब चलो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता. When the colors come to blue and green and yellow, वो ग्लास आप प्लीज मेहरबानी करके उन तक नजदीक से, मतलब खाली आपने ड्रॉप डाला, देखो आ गया, ये ऐसे नहीं. प्लीज वो ग्लास को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दीजिए और दिखाइए सर, अनजाने में आप ये पी रहे थे सर, और सिर्फ आप ही नहीं पी रहे थे, आप अनजाने में ये अपने परिवार को भी दे रहे थे. और ये जब मैंने देखा था ना सर, तो मुझे बहुत खराब लगा, शायद आपको भी खराब लग रहा होगा, बट दिस इज द थिंग. फिर जब तीसरी प्रॉपर्टी की बात आती है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो क्लस्टर, वो तीसरी प्रॉपर्टीज को अगर आप दिखाओ कि सर ये नॉर्मल केस के अंदर हम जो भी खा रहे पी रहे, आप घर के किचन में आप खाना वाना बना रहे हैं, है ना, और वो किचन की कढ़ाई को अगर जैसे आई ऑलवेज हैव द फैमिली डेमो, तो उसमें कोशिश कीजिए कि आप बच्चों को और उनकी मिसेस को और परिवार के सारे सदस्य प्रेजेंटेशन में रहें, ऐसी कोशिश जरूर कीजिएगा. ये मत सोचो कि चलो वो उनका कोई रोल नहीं है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये मशीन उनके लिए है. क्योंकि कोई भी आदमी अपने लिए कुछ भी चला लेता है, लेकिन परिवार की बात आती है, और जब वो परिवार के लोग बैठे हैं, जाने ये परोस रहे थे, भी नहीं पता था, लेकिन राजेश जी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. तो कॉल घड़ी बीच में आ रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहा है मुझे. तो जब चावल हम वो धोते हैं और वो दिखाते हैं कि सर देखो कितनी कोशिश से भाभी जी इसको वॉश कर रही थी कि परिवार के जो लोग हैं उनको ये नहीं, लेकिन वो नॉर्मल पानी से नहीं धुल रहा था सर. अब ये पानी मैंने आपके ग्लास में डाला, अब देखो ये कितना जहरीला दिख रहा है सर. ये क्या है? ये पेस्टिसाइड है, जाने अनजाने आप खा रहे थे. और सर मैं आपको बताऊं, बुरा मत मानिएगा,
जब सर मैंने, क्योंकि आई एम द ऑनर ऑफ द मशीन और ये मशीन मेरे कई सालों से मेरे घर पे है, जब मैंने ये देखा ना सर, जब ये मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सारा कुछ तो परिवार के लिए कर रहा हूँ, और नहीं पता था वो बात ठीक थी, लेकिन जानने के बाद ये जहर उसको दूसरे दिन भी दूं या नेक्स्ट टाइम पे भी दूं, ये मुझसे तो नहीं बर्दाश्त हुआ। मैंने बोला था सर जब तक मशीन आती नहीं ना तब तक कम से कम मेरे घर के लिए 5 लीटर का बैग आप मुझे प्रोवाइड करोगे तो ही ये मशीन साइन करता हूँ। तो कुछ चीजें आपको क्लोजिंग के टाइम से ज्यादा जब आप डेमो में दे रहे हो, वो इम्पैक्ट इतना सीरियस होना चाहिए कि यस, और वो उनका इन्वॉल्वमेंट लीजिए, वो सारी चीजें बताइए, दैट इज अ क्लोजिंग पॉइंट। आपको अलग से कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनको पूछना चाहिए कि सर कैसे हो सकता है, कैसे ये मशीन हमारे घर पे आ सकती है। सर वी हैव ऑल द प्रोविजन, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए कि दिस इज, और वो इतना सीरियस है। मेरे केस में जो डेमो मैंने दिया तो मेरा सक्सेस का रेशियो ही तभी आया कि आई फील दिस इज अ वेरी इमोशनल, यू हैव टू टच द हार्ट। बिना हार्ट को टच किए आप खाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, कुछ नहीं होने वाला। ये बात जब दिल के, क्योंकि मैंने देखा इमोशनल के अंदर आपके पास करोड़ों रुपया है तो आप बोलोगे चलो ठीक है, लेकिन आपको वो नेसेसिटी लगनी चाहिए, नहीं मेरा बच्चा ये नहीं पिएगा, और वो इम्पैक्ट आपके डेमो पे होता है। और उसके लिए मेरे लिए हमेशा एक पॉइंट रहता है कि योर डेमो इज एवरीथिंग, नो डेमो नो सेल, जो लोग बोलते हैं इट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, लेकिन डेमो करने से भी कुछ नहीं, यू हैव टू गिव योर 200% ऑन द डेमो। उस पोजीशन के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा माहौल हो कि क्या देख रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ हर डेमो में ऐसा नहीं होगा, बट आपकी कोशिश ऐसी रहेगी तो आपको वो हाँ, फिर हम जा रहे हैं तो फिर वो पूछना बहुत जरूरी, जैसे पाटिल सर ने कहा, चिन्नप्पा जी ने कहा कि पेमेंट ऑप्शन जनरली लोग पूछते हैं कि सर पेमेंट ऑप्शन, तो सर आपके पास कार्ड है तो कोई टेंशन नहीं, अभी स्वैप हो जाएगा और आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 12 EMI में, आपके बैंक से ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका चेक है तो अगर आप चेक दे देंगे तो मुझे थोड़ी आसानी होगी। और मेरे केस के अंदर आई टेक कि चलो ठीक है सर, आपका एक 50,000 का चेक बना के कंपनी के नाम पे दे दीजिए, और बाकी का जब तक मशीन का प्रोसेस मैं कर लेता हूँ, जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो मेरे को ऑर्डरिंग में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो वो चेक भले उसने दे दिया, हमको वो चेक नहीं डालना, वो पड़ा है, लेकिन मुझे वो एश्योरेंस कर दिया, क्योंकि वो बंदा जब चेक साइन कर रहा है दैट मीन उसने मेंटली ये डिसाइड कर लिया है, खरीद ली है ना, ये मशीन मुझे चाहिए। फिर कल या परसों में ये चांसेस कम हो जाते कि चेंज हो जाए, या उसका अंकल को बोल रहे अरे पागल हो गया था ऐसे क्यों ले लिया, चांसेस नहीं यार, वो तो बुक हो गया, पेमेंट तो मैंने कर दिया। तो ट्राई टू हैव दैट काइंड थिंग, लेकिन उसमें भी ये केस टू केस के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा क्लाइंट है, कैसा प्रोस्पेक्ट है। ये चीज आपको एक यूनिवर्सल फॉर्मूला में, यूनिवर्सल यूनिफॉर्म में सेट नहीं कर सकते, इट डिपेंड ऑन केस टू केस। फैंटास्टिक। राजेश का मानना है कि क्लोजिंग सिर्फ डेमो के बाद नहीं, डेमो itself can be a closing if you're alert and aware. That is fantastic point coming from all the panelists. Can we all give a clap on the chat box for all our panelists, please? Can we all give clap on the chat box? Fantastic going, all panelists. Really love all of you here. Fantastic audience as well, putting a lot of great questions. Okay, the next question coming from Madan Kumar. He directly messaged me here. The question, let's go to Naveen sir. Naveen sir, the question is, right now being the pandemic time, every person and have a big slump in their cash flow. In this situation, how do we find the right customer so that we don't waste each other's time? That's a question coming from Mr. Madan Kumar from Chennai. So over to you, Naveen sir. Pandemic, yes. Normally, like always I ask people, in pandemic, we are under lockdown, leaving all our work, closing down our business. Majority of the people do under lockdown. What is that one good reason holding them under lockdown? Answer is health. When we speak about health, 70% of our body is water, and that's the product what we are promoting. The product what we are promoting today, it's the need of the hour. It's not a luxury. It's not an expense. It's an investment on health, and it's the need of the hour. If they say, I don't have money, all the more reason for that person to come in, because he is not doing expense, he is investing into business. And today we do have a platform.
I speak about the training, the education, the platform, what this company has got, how to build this business. So I get an opportunity, I get a window to project, showcase the business what we have got. So for me, I always look at this pandemic as a blessing in disguise from business point of view. From business point of view, yes, it depends like how we put it across, without hurting the opposite person's ego. We can speak about the health, we can speak about the business. So it's a platform for us to project it. I don't see this as a challenge, no. Fantastic. Thanks, Naveen sir, great question. B.R. Patil sir, same question to you. B.R. Patil sir, पैंडेमिक है, किस तरह से हम राइट कस्टमर्स को ढूंढ लेते हैं? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके हिसाब से? B.R. Patil sir. Yes. So pandemic एक बात है, actually there is no right and there is no wrong. If you ask, मुझे आप पूछोगे तो मैं एक ही बताऊंगा. You have to talk less with the more people. This is a simple formula. Okay. So हम जब भी बात करते हैं पैंडेमिक में, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास मनी का पैसे का प्रॉब्लम है, तो वी हैव टू टॉक अबाउट द बिजनेस. दिस इज माय फीलिंग. पैसा नहीं है, पैसा कमाने के लिए आपको यस हम बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं. Correct. Wow. Fantastic. So, from me. Thank you. Fantastic. All right, let's go to the next question. Here the question coming here. Is the KANGEN device producing alkaline water or does it produce ionized water? So what exactly the difference between alkaline water and ionized water? So over to you, Chinnappa sir. Yeah, very simple. This is basically like what the machine does. So when we speak about as KANGEN device, it is called as a ERP water. That is a electrolyzed restructured water. So when we speak about is the electrolyzed restructured water, we need to understand like how exactly the mechanism works. So we are speaking about is the electrolysis process. That's what we call it as an ionizer. It's called as an ionization. You have as the anodes and the cathodes. So the water like it gets is ionized. So when the ionization happens, there is a alkalized water which gets produced. So now we need to understand like what is the difference between as an alkalized and the alkaline water. See, alkaline is an addition of its calming minerals like is calcium, sodium, or maybe like it is a magnesium and the potassiums, which will increase the pH value. So which means you are genetically modifying the water. So when you genetically modify the water, to the naked eye, it doesn't see the difference. They say like it is alkaline water, but it is not well dissolved. These minerals are not well dissolved in the water, but over a period of time, like when you consume is the alkaline water, these minerals gets deposited at different organs. That's where the problem starts. So please understand, when we speak as to the prospects or when you generally speak, don't ever mention a word called as is alkaline. Alkaline is not a word like what we use in the KANGEN devices. We use is a word which is called as alkalized. So in alkaline, what's the difference between is alkaline? Alkaline, I told you, what is alkalized? Alkalized is a process. When the current passes through the water gets split into two. One is called as a positive water, one is called as a negative water. So this water, when the splitting happens, it is an electrically charged water now. So it produces is a acidic water and a alkaline water. So this alkaline water, because of the splitting which happens, is called as a alkalized water. The process itself is different. And here, there is no addition of the minerals or no deletion of the minerals. So consumption of this water will be always good because this water has got as the property which is called as antioxidant, which is negatively charged, because that's very, very critical, because a lot of people, they speak about is only antioxidant. They don't speak about the negatively charged water. And second one, it's an alkalized water. And third one, the microclustering happens. I hope like this answers the questions. So ionization is a process. Alkaline is a byproduct. Alkalized is a byproduct of the ionization. I hope like it answers that. Anil, back to you. Thank you. Fantastic. So there's a huge difference between alkaline and alkalized that's coming from our panelists here. All right, let's go to the next question. It's a rapid fire question here. Yes. So let's go to Rajesh ji. Rajesh ji, क्या business plan देना चाहिए हर demo के बाद? हर एक prospect को business plan देना जरूरी है कि वो case to case based होना चाहिए? Rajesh ji.
Okay, I think I need to help him to unmute. Rajesh ji, aap hai wahan pe? I think it's traveled. So let's go to Naveen sir here. Naveen sir, the question to you: is it really a mandatory or required necessary, or is it optional that we should show this demo to each and every prospect? What's your take on this, Naveen sir? If you ask me, like how everybody needs water, how everybody drinks water, same way, there's nobody who is allergic to money. And today we are not salesmen, we are not just selling the product, nor we are here just to create awareness and come back. We are building a business. Along with the product, yes, business holds the same amount of importance. If you ask me, my business, my product presentation is always followed by the business presentation. Everybody needs water and nobody is allergic to money. So if you ask me, yes, business presentation is very much required. Fantastic. Thank you, Amit. Thank you. Great. So, B.R. Patil sir, आपका क्या मानना है? Business plan हर एक demo के बाद दिखाना चाहिए या नहीं? Is it right or wrong? So I agree with the Naveen. But sometime what happens कि कहीं मैं इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाता हूँ या डिपेंड करता है अगेन केस टू केस, या मैं कोई सेलिब्रिटी के पास जाता हूँ तो डेफिनेटली they will not like the business presentation. Okay, so these are the very ये जो है बहुत कम केसेस पे केस होता है. लेकिन जनरली अगेन I agree with the Naveen. If you show the presentation, business presentation, there are a chances कि जो नहीं लेने वाला है, जिसको महंगा लगता है मशीन, वो प्रोडक्ट ले सकता है अपना. That is very important. लेकिन हमारे जो आपको भी कई लोगों को पता है कि बोला जाता है कि पहले डेमो दो. Yes, without demo you cannot give the presentation. Before product demo, business plan नहीं दिखाना हमें. We have to show the product value first, then business plan. This is a series. First product demo, then business plan. हम कभी उल्टा नहीं बात कर सकते कि पहले बिजनेस प्लान और बाद में डेमो. Fantastic, great. Chinnappa sir, your take on it, please. Yeah, thanks, Anil. I definitely compliment us both the panelists, Naveen and BR. See, like how we do, like long time back, Mr. Rajesh mentioned, like whenever you give us a demo, like always give a demo to the family. You have as a husband, you have the wife, kids, parents. Okay. So there are two things. One is like the decision to be taken for the product, and there is a decision for the financial payments to be made. See, now the decision for the product can be taken either by the youngest member in the family, maybe the small kid who has seen that alkaline demos in the school may take a decision and say like, Papa, this is right. I want this machine. So she maybe is the decision maker. But the financial decision has been taken by the husband. Now, when you have these two, there are two different decision makers in this sitting in the same family. Same way, when you are speaking about as a demo, just throw the stone. You say like, I also started with this. I picked up this machine, but the company also said by the time I do around 13 to 15 machines, you can recover back. So I thought, let me do is good for the people. Then I started with this. So I'm just probing him. I'm just throwing the stone at him. If it hits it right, I think like I can go to the next step of putting the presentations. So this is very critical, because like what happens, the outside world is somewhere like it is accepting is the direct selling and the networking. But the time like when the networking comes in, most of the people, they pull back, even if it is a good product. So be very careful, like how do you throw the stone? But throw the stone so hard that it hits the right person. Either the wife may say, okay, fine, I would like to take it up because I cannot do a 9 to 6 job. I can spare around 2 hours. Okay, the husband may say like, I've got so much of the contacts. If I don't speak to my people, somebody will definitely speak. So why not I speak? So there is a parallel income which can be built up. Then you speak about saying is 100 missions, 50 lakhs, 10,000 missions is 100 crores. Bus, that is huge. Thank you. Fantastic. Wow, great clarity coming from all our panelists here. Sam Sia always used to say, all our panelists here, he used to tell, अगर कोई बंदा Mercedes E-Class है तो उसको yes class लेने का मन होता है. अगर कोई BMW 5 चलाता है तो उसे BMW 7 लेने का मन होता है.
So nobody is allergic to money. Even if he's the biggest industrialist, Sam Sia was telling that go and talk about the business. अगर कुछ ज़्यादा पैसा आएगा तो उसको बुरा नहीं लगेगा. So that is the stuff coming from Sam Sia, one of the greatest leaders of all time in ENAGIC. You know, ladies and gentlemen, you can put that point also. अगर वो बहुत बड़ा आदमी है तो उसको और भी बहुत बड़ा बनने का मन होता है. So bindas business बता दीजिए उसे भी. Right. All right. Let's go to the question here. Where can we get all these presentations? Where can we get all these business plan presentation or the product presentations? You want to take that question, Chinnappa sir? I just want to put across the saying, like, I think like you are very fortunate to be with KANGEN, and I hope like you need to be thanking the person like who's got you inside. I think like he is the person who can provide you with all the things. Where did you see is that a demonstration? You saw this with the person who got you into the business. You ask him, boss, you give me that. Simple. You get is everything. Everything is there in the platter. See, that's what like we speak about. Like the product is beautiful, the marketing plan is beautiful. You have got as a team support. You got as your upline. You got as the PGAT. There are all people who are here to support you. But only thing is like you need to ask. Dare to ask. Things are there with you. There's nothing like you don't have to be the scientist to invent a presentation. No, it has already been there. You ask for it, things are there. My simple suggestion is please call up your upline right now and tell him, boss, I want these things. Whatever your requirement you get. If he doesn't have, definitely there is a way to get things done. Thank you. Fantastic. See your take on it, Naveen sir. Where can we get all these presentation and you know, any additional info from your side, Naveen sir? As Chinnappa said, yes, the first point of contact is the person who has brought us into this business, our upline. And at the same time, today there are like a lot of platforms like YouTube. We have all the presentations. You have like a lot of CDs available, the product presentations, everything. Different platforms. Today it's very easy to get the product presentation or business presentation. Things. If you go on YouTube, we have got a lot of things. You have got your upline. If upline is not active, you can go one step up upline. So if you want the presentation, yes, there are a lot of ways. It's not a rocket science today. It's not a rocket science. I mean, we can just dig on the computer. You get a lot of presentation of different speakers. Fantastic. Back to you, Anil. Wow, fantastic, fantastic. So, ladies and gentlemen, hope you all are getting value and the satisfactory answers. Even if you're not getting it, you can say, wow, we can have more sessions like this. You know, we have, in the interest of the time, we are trying to go rapid fire here and involving all the panelists to get different perspective on all these different questions. Okay, let's bring on our founder CEO, Shashidhar Ji Iyer sir. With all these questions, any words of wisdom from your side, Shashi sir? Sorry to put on a spot here. No worries. KANGEN is in my breath. KANGEN is in my blood. KANGEN is in my everything that I do. So KANGEN is natural to me. So I don't have to really prepare for KANGEN, to be very honest. Point number, there are a few things. Today's session, let me tell you, as a student, I have learned so many things from this panelists. So a big wow to all the panelists, guys. Type wow in the chat box. They deserve a wow. It takes a lot of courage to stand in front of the people on an open platform and answer questions, guys. Imagine a prospect is only one individual or maybe 3-4 group of individuals. But here we are 65 right now. Also, when it started, we were 70, 75 plus. To take questions on an open platform requires a lot of courage, lot of guts. Guys, let me tell you, it requires a lot of courage and guts and high integrity. Unless you have high integrity, you cannot answer these questions. When I say high integrity, I'm talking about being connected with the product, using the product daily, drinking the water daily, feeling the water daily, feeling the device daily. You know, it's so important. You cannot develop integrity and strength without that. You can't stand people. That's number one. Number two, answering the last question, which was shared by Naveen and Chinnappa ji, both of you, I would like to add one more thing. Most of the time, what happens is we do not believe in our upline. We do not
show the confidence in our upline because you think you are more powerful. You have got more money and bank balance and status in the society. You think you are more intelligent and your upline is a good for nothing. You treat him like a peon. You treat him like an assistant. It could be your office boy. It could be your maid. It could be your maid's son, your rickshaw wala, tanga wala. We don't know who has brought Kangen to you. Doesn't matter. Like always, I learned this from Anilji. Always look at the message, not at the messenger. Fall in love with the message, not the messenger. And most of the time, people make this mistake. अरे मेरे अपलाइन को कुछ नहीं आता, मेरे अपलाइन के पास कुछ भी नहीं है, मेरा अपलाइन डेमो नहीं देता, मेरा अपलाइन प्रेजेंटेशन नहीं देता, मेरा अपलाइन फॉलो अप नहीं करता, मेरा अपलाइन इंफॉर्मेशन नहीं देता. Guys, stop this. I'm telling you right now, stop this on the spot. The most idiot upline that you feel, you may have, everybody feels, you know, like I shared this in one of my trainings earlier. Everybody wants that, मुझे कोई upline समझे, वो upline सोचता है मुझे कोई downline समझे. You know, people have the same process. Somebody understand me, and the world is moving around. So even the most new upline, let us say you have joined, your upline has joined one day before. He doesn't know how to even operate the machine. He doesn't know what are the books. He doesn't know how to do a demo. It's absolutely fine, guys. But an upline is an upline. How many of you abuse your parents? Please type in the chat box. Because they are dark skinned, because they are short, because they are obese, because they are, you know, skinny. How many of you abuse your parents? We don't. An upline is like your parent in this industry. He brought you here. अगर वो पैदा नहीं करते तो आप पैदा नहीं होते. He is the source. And if you abuse your roots and source, if you don't show confidence, see, your upline can be a rickshaw wala, tanga wala, goda wala. Everybody's parents are not Ambanis and Birlas and Tata. Still we accept them, right? Because we love them. The first thumb rule, love your upline. It's very important वो कैसा भी हो, वो बुद्धू हो चलेगा. You make him a Buddha. एक बुद्धू को आप बुद्धा बना सकते हैं. एक पावरफुल डाउनलाइन एक अपलाइन को पावरफुल बना सकता है. आप नीचे से 682-3 बन गए तो वो भी बन सकता है आपकी वजह से. Support the weak. Network marketing is a beautiful industry of supporting each other, growing together, developing each other's strengths. Instead of pulling down, we all can remain on the top. The top is empty. We all can be on the top together. Don't try to pull somebody down. Not required. So, uplines. He does not have an ego. He does not shy away from the fact that I don't know. तो वो जाके किसी भी लीडर से पूछ सकता है. Please give me a presentation for my downline, and he will get it for you. You're not doing this, you're holding yourself back. You're not going on internet, you're not going on WhatsApp, you're not going on YouTube, you're waiting for 1 year for something to happen and it doesn't happen. By then, the world has moved further. Things have changed. So ladies and gentlemen, here important is first, thank your upline. Can we do this? Thank you, my upline. Type this. Thank you, my upline today, the person who brought you here. Let him be out of the system. Let him not talk to you. Let him not even give you a call, doesn't matter. Please type, thank you, my upline. Without him, you would not have been here. Number one, he has shown you the way. It is for you now what you make out of this, what he has offered you. Very important. Now, what do we make out of this? $1 billion question, $1 trillion question. So many panelists free of cost. How many $1 million did you pay today to attend this meeting and ask this question? $1 million panelists sitting right over here with 20 years experience, 10 years experience, 15 years experience in the direct selling industry. Forget ENAGIC. They are the kings. They are the queens. They are the dynamites of this industry. If not now, sooner or later, you're going to see them as -8s. Nobody is less than that on this panel. So guys, if you cannot pay $1 million, can you send $1 million blessings? Type on the chat box blessings today for the panelists. Nothing is free.
Please don't ask for free in the universe. We all can bless somebody. Then the grace flows to you. So it is a very important message that I want to drive. Then again, how many of you here have bought a product on discount? Please have the guts to say I. If you have the rights to ask questions to panelists on this platform, I ask you a question right now on this platform. How many of you brought products on discount? Please type. Don't worry, you're not going to be terminated or suspended for that. Asking a discount is your birthright as a customer. But as a distributor, it is not your right to give discounts, guys. You bought it is good, but don't start giving discounts because you got discounts. Don't start a wrong trend. Have the courage to accept if you have brought the product on discount. How many of you did snatching and poaching? Please type in the chat box. Unethical practices. Type in the chat box I. Have the courage to say, yes, I did. I did poaching. I did snatching. At times we are tempted. Arey, wo mera cousin hai. Arey, wo mera bhai hai. Arey, I know that person for 10 years. Do you know right now on this platform, let me tell you, I'll give you an example. People will do what you do, not what you say. I have a lady here, Nazima Vora. You can check. Nazima, can we unmute her and get her? I am her mentor for more than 10-12 years. I know them as a family. I hold the highest respect. But then, because her brother joined a business proposition in Gujarat, it was a dilemma. Ask her what I said. Nazima ji, please come on the screen and say, what did I tell you? I could have always told her, join me. I said, no, brothers and sisters in one genealogy, go and join that. Nazima ji, you are there? Yes, sir. You can share your experience. Yes, sir, this is the truth. And sir ने बोला था मुझे, I am there for you anytime. I just want you to be in this business. And don't worry, I am always with you whenever you want me. Think about this, guys. How many of you can do that? 2 lakh ka nuksan bologe aap. But I brought out 2 crore ka faida because she will not do unethical practice. Because she is a byproduct of ethical practice. I say big cheers to Nazima. Please. She deserves it. She was also emotional. Okay, my mentor, Shashi sir, I want to join you. I said, no, join your brother. Why separate their contacts? Are we so short of prospects in our life? Are we so desperate to sell? We are in a human-based relationship marketing. Don't forget this. We are not into sales. We are into human relationship-based marketing. We are supposed to help people and grow people. You will not become poor by losing 2 or 3 people. What discount and what snatching and poaching are we talking about? 33 lakh units to be sold on this platform, guys. In India alone, the whole world is waiting, by the way, because law of diffusion, which says that we have not even scratched 2.5%. We are less than 2.5% of the actual potential of the world's largest kitchen appliance. There is no competition. Every next day, an alkaline technology comes, a product comes, we talk about competition, guys. How many of you buy cheaper versions of the products without even knowing what you are headed for? Even if you buy any cheaper alternatives, after 1 year or 2 year or 3 years, you have to buy a KANGEN unit. अब भूल जाओ ये बात कि आप KANGEN नहीं लोगे. You will have to buy because the products are a failure. If something has not happened for last 47 years, history has not changed, what makes you feel in the 48th year this is going to change? Guys, we all are millionaires. So important. If you bought a product on discount, you're a cancer and you're causing cancer to the society against the compliance and company. How many of you want to encourage this? Please type in the chat box. No discounts. Please type no discounts. Let's face it squarely. Because this problem will be solved only by us, not by the company or not by outsiders. People are going to ask you,
Don't invite cancers in your life, in your system, in your team. Not required. We have got a lot of people in the marketplace. Say no discount. If you want discount, there are cheaper versions. All the brands use KANGEN name in the search engine optimization because they do not have their own identity and guts and existence. So anything that starts on a false premise and note, अगर फाउंडेशन ही झूठा है तो क्या बिल्ड करेंगे वो लोग आपके लिए? अगर उनसे मशीन भी लोगे ना, जहर ही मिलेगा आपके फैमिली में, डिसीज ही मिलेगा. डोंट एक्सपेक्ट अल्कलाइन में आपको कुछ लाइफ में हेल्थ मिलेगा और वेलनेस मिलेगा. यू विल गेट अल्कलाइन डिजीज. No trainings, no orientations, no systems. Guys, ENAGIC triggered the thought of alkalinity, alkaline technology in India. How many of you agree to this? The education on alkalinity or the alkalization began with ENAGIC, educating people about water. And today everybody has become a scientist. And every scientist trying to talk about half the price, okay, quarter the price, cheaper versions. In life, precious things are never cheap. The diamonds can never be cheap. The gold can never be cheap. The platinum can never be cheap. The titanium can never be cheap, and values cannot be cheap. And I don't believe we are cheap. Please type, we are not cheap. Please type in the chat box, we are not cheap. Talk about earning $1 million handshake. Let's make $1 million here. Why we should go for discounts and wrong practices? Saving 10, 20,000? Saving 1 lakh? Let's earn $1 million here. You have a platform, you have a system that is willing to coach you, train you, support you unconditionally. How many of you here, please type in the chat box, have got unconditional support on this platform? Please type here. Please type here on this chat box. How many of you have received unconditional support from Panacea, H2O, Panacea, LCell, Panacea Global Mentors, Panacea Gold Action Team, from Panacea Gold Advisory Board? Guys, we are here to support you. Do not encourage wrong practices. How many of you buy accessories, duplicate filters at half the cost, duplicate enhancers at half the cost? Please type in the chat box. It will fail your demos completely. It will damage your plates completely. It will damage your health completely. Guys, do not encourage duplicate demos, duplicate accessories, duplicate filters. Don't buy. Discourage them. Throw them out of the market. It is our family, it is our life, it is our health. We need to do something about this, guys. Take charge. We stand by you. We pledge by that. It's a commitment. One world, one family, ENAGIC. Back to Anil. Thank you. Wow, great stuff, Shashi sir. Thank you so much. Let's go to all the panelists here. Last words of wisdom. Let's start from Chinnappa sir. The last words of wisdom from your side to all our participants here. Nothing much. See, I'm also walking the same way like how you are also walking. Maybe like it's only like for us to take that first step. Each steps are difficult. The time like when you take it in the right stride, do the right things, as Shashiji was mentioning, maintain certain things. Like one is the belief system, have faith, have trust, build up is on your integrity, and the fifth one is like maintain discipline. This business doesn't happen as like on a Sunday morning, or the next one is on the 1st of July, and the next meeting will happen on the 1st of January. It should happen on a daily basis. Maintain a discipline, have integrity. I think beautiful, like we can all walk together. So let's all meet up as regularly on this PGAT. I mean, this is a lot of love, lot of gratitude, lot of blessings. Fantastic. All are welcome. All the very best. Thank you so much. B.R. Patil sir, last words of wisdom from your side as panelist. How was your experience as well? B.R. sir, आप unmute कर सकते हैं. B.R. Patil sir, आप हैं वहाँ पे? Okay, let's go to Naveen sir. Naveen sir, last words of wisdom and your experience on the panel today. There's no shortcut to success or growth.
Yes, today this platform is giving us a lot of inputs, adding a lot of value. It's not only in the business too. Even if we talk about our personal life, yes, we can learn a lot of things out of this platform. And today, one thing what I've seen is like people, yes, we need to have expectation, but most of the people, they come with unrealistic expectation. And today, if we have a realistic expectation, and at the same time, if we are focused to whatever we are doing with commitment, with responsibility, and again, always I keep stressing on this word, building this business with ethics and professionalism, this will lead us to long way. And yes, PGAT, Panacea H2O, the platform is there for us. It's a family. We can learn a lot of things out of this platform, and we can give a lot of things to this platform. This is a platform where if you're feeling depressed, if you're feeling sad, we need this platform. If you have done something superb, this platform needs you. So this platform is for everybody. So with this, we can always grow together. Fantastic. One for all for one. Great, Naveen sir. B.R. Patil sir, over to you. Last words of wisdom from your side to all our participants here. B.R. Patil sir. Actually, Anil sir, क्या question था? Sorry, मेरा wrap up में है. आपका अनुभव कुछ last words of wisdom आपसे हमारे participants के लिए. कोई question नहीं है, हो चुका है. It's already 11 o'clock. Okay. Last statement, one liner from your side, B.R. Patil sir. So मैं एक ही बात बताऊंगा सब participant को कि ये जो platform हमें मिला है, everybody getting actually benefit, but there is a one thing actually everybody should participate. That is very important. If you don't participate,